Hello बच्चों, let's first read the question. And the question says an electric dipole of length 2 centimeter is placed at an angle 30 degree with an electric field 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. If the dipole experiences a torque of 8 into 10 to the power minus 3 Newton meter, the magnitude of either charge of the dipole is. So basically it is asking for the charge of electric dipole. Okay. The key concept. Torque, magnitude of torque on an electric dipole is given by P E sin theta, where P is magnitude of electric dipole moment vector, capital E is the electric field, and theta is the angle between P and E. Now, P is given by Q into D, where D is the distance between the charges, small charges, and Q is the magnitude of charge. Okay. Now, use the given value and plug it into this equation. Okay. इस इक्वेशन में हम लोग इसको पुट करते हैं. तो टॉर्क का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन मीटर. तो टॉर्क के जगह पर क्या लिख देते हैं हम 8 इंटू 10 टू द पावर minus 3 Newton meter. This is equal to Q is to be calculated. So Q into D. In place of D, it is 2 centimeter, means 0.02 meter. Okay. It is QD into E. Okay. What is the value of E? E is 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb, and sine of angle between the dipole moment vector and electric field vector. Okay. That value is 30 degree. So put it here 30 degree. अब सिर्फ कैलकुलेट कर देना है Q का वैल्यू, इसको कैलकुलेट कर देना है. तो ये हमारा आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 0.02 into 2 into 10 to the power 5 into sin 30 half, which is 0.5. After calculating this, तो इसको कैलकुलेट करते हैं. अब ये 10 to the power 5 0.02 into 2 0.04 into 0.5, it will be equal to 8 into 10 to the power 5, 3 ऊपर जाएगा. तो ये 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, और ये हमारा 0.02 इंटू 2 0.04 इंटू 0.5. दिस विल बी इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 5 4 5 20, तो 20 इंटू 10 टू द पावर minus 3. So this is minus 2. तो ये हमारा एक्चुअली कैलकुलेट करके आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम. दिस इज इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम, बिकॉज 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम. सो which option should be the correct one? The option A is the correct answer. Thank you very much and all the best.